This is the reaction of alpha hydrogen containing carboxylic acid so it's not given by formic acid. The reaction is here. The alpha hydrogen containing carboxylic acid is treated with bromine in presence of red phosphorus. Now the question is, what is the role played by this red phosphorus? We know that this red phosphorus with bromine giving rise to PBr3. This PBr3 then react with PBr3 so as to giving rise to ethanoyl bromide plus H3PO3. This ethanoyl bromide undergo tautomerization with 1,3 hydrogen shift, and we get कीटो का बन गया इनोल, and this is where the alpha hydrogen has become more active because of this tautomerization. Hence, if we do its further bromination, the bromination occurs at alpha hydrogen, where you will be getting HBr plus BrCS2 COBr, and this BrCS2 COBr is then treated with acetic acid 1 more mole, where the alpha hydrogen replacement by Br become easier. Again we get ethanoyl bromide and we get alpha bromo acetic acid. This alpha bromo acetic acid, which is being formed here as a result of HBZ reaction, the objective is not to prepare alpha bromo acetic acid, but
The objective is to prepare derivative of carboxylic acid at alpha hydrogen. So you treat it with aqueous KOH so that you will be getting this, whose IUPAC name is 2-hydroxyethanoic acid, and whose common name is, we did in previous class, glycolic acid. Yes or no? The substitution of this can be done with, let us say, you treat it with ammonia, or you treat it with KNH2, you will be getting KBr plus CH2COH, and this is alpha aminoethanoic acid, which is the simplest amino acid, glycine, and is the only amino acid who is optically inactive. So you can do the same behavior with propanoic acid. The reagent is same, mechanism is same, but the product will be more important products we can get out of it. If it is bromine, it occurs at alpha positions. If it is chlorine, it occurs at alpha and beta, both positions. So by doing this in presence of red phosphorus, we are getting 2-bromo. Yes, we are getting 2-bromo propanoic acid. This 2-bromo propanoic acid, if treated with aqueous KOH, we will be getting CH3C HOH COH, and this we have already done. The name was, yes, lactic acid, which was optically active, and the first compound we did it was lactic acid. Yes or no? In the same manner, if you treat it with KNH2, the product you will be getting is optically active, that is 2-amino propanoic acid, who do have the chiral carbon. As you did it over here also, you can treat it with KCN followed by hydrolysis. We know that KCN or cyanide followed by hydrolysis form carboxylic acids. Yes or no?
So this KCN with this will be forming CS2COOH, and this is alpha cyanoethanoic acid, which followed by acidic hydrolysis, you will be getting CS2COOH, CS2COOH, that is malonic acid. You just remember one thing, that all those acids who having electron withdrawing group at beta carbon, they when heated undergo decarboxylation. Undergo, what does that mean? Just see here. We having COOH, CH2, CO, CS3. We having CH2, COOH, and be having aldol acid who having withdrawing group at beta position. This is alpha, so beta is withdrawing. This is alpha, beta, beta is again withdrawing. This is alpha, this is beta, no electron withdrawing group. So we are saying electron withdrawing group at beta position. जहां भी कहीं होगा वहां पर हीट करने से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी. Decarboxylation occurs. जब डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी का मतलब हुआ कि भाई आपने इसको हीट कर दिया और हीट करने से यहाँ CO2 भाग गई.
CO2 भाग गई तो आपके पास यहाँ सिर्फ H रहा और H और CH2 ने बना दिया CH3 we got ketones। जबकि इस दूसरे केस में भी CO2 भाग गई और CO2 के भागने से we got it acetic acid। Yes or no? P2O5 is a dehydrating agent. So malonic acid when treated with P2O5, there will be removal of 2 moles of water and you will be getting C3O2. This C3O2 is called carbon suboxide. But if there is no withdrawing group at beta positions, no decarboxylation will occur. Then the next part we having is that COOH is a meta-directing group. So is electron withdrawing group, so that you do bromination, nitration, anything you do, sulfonation you do, that will definitely occurs at meta position. And the product we will get is meta carboxy benzene sulfonic acid. So there will be meta sulfonation product, there will be meta nitration product, meta will be the bromination product. Now is connecting bridge between carboxylic acid and carbonyl compounds. Formic acid is the connecting link between the carboxylic acid and carbonyl compounds. It resembles with carbonyl compound in its oxidation behavior. HC bond is characteristic feature of any aldehyde, and the oxidation of that HC bond is easier as O is being added between C and H. That's why the aldehydes, they are called the strong reducing agents. Carboxylic acid is the only carboxylic acid who having CH bond, and that is here. And hence the addition of O in this CH bond become easier, and this formic acid is converted into carbonic acid. Formic acid converted into carbonic acid. The process of
going from formic to carbonic acid is similar to oxidation of aldehyde. Thus, this resembles with carbonyl compounds in oxidation. Thus, Tollens reagent test, Fahling solution test, Benedict solution test, these are all given positive by formic acid. This gives indication that how it resembles with carbonyl compound in its oxidation behavior. Not only this, no carboxylic acid when treated with mercuric chloride get converted into white precipitates of mercurous chloride, and this reduction of mercuric to mercurous occurs due to oxidation of formic acid. So this is the only acid who resembles in its oxidation behavior with aldehyde. So this make a bridge between carbonyl compound and carboxylic acids. Whereas properties other than oxidation, that is, properties other than oxidation, they resemble in its physical properties with
It is only in oxidation behavior that it resembles with carbonyl compound, but in rest of the properties it resembles with carboxylic acids. Whether in boiling point, whether in melting point, whether in types of reactions, this resembles with carboxylic acid. All other properties they resemble carboxylic acid. ठीक हो गया? So now we are into amines. First is the method of preparation. We have already prepared amine by reduction of cyanide. So it is aliphatic and aromatic amine. So if we see the method of preparation, the first method is reduction from cyanide, etc. We have already done. So we are doing reduction of nitro compounds. Reduction of nitro compounds. So we having CS3 NO2 nitroethane, aliphatic nitro. This when undergo reduction in acidic medium, this led to the reduction of nitroalkane into primary amine. In the same manner, if it would have been nitrobenzene, then that nitrobenzene with the same acidic medium will be giving rise to aromatic amine, that is aniline. However, the two they differ in their reduction product when we treat them with lithium aluminium hydride. If you treat it with lithium aluminium hydride, lithium aluminium hydride, aliphatic nitro compound will be reduced to primary amine. But the aromatic form a different product, and that is diazobenzene. If we take the aromatic
nitro compound and that aromatic nitro compound in different basic mediums. If treated with sodium arsenate, 2 mole of this will be forming a azoxybenzene. If it is treated with in basic medium but in methanol, there will be 8 nascent hydrogens, so that there will be 4 H2O removed, and we will be getting the major product as diazobenzene. But when it is stronger reducing agent with 10 nascent hydrogens, this will be forming hydrazobenzene. Yes or no? तो ये हमने कर लिया बेसिक मीडियम. अभी पहले क्या था कौन? Acidic medium. Now let us do the neutral medium. If you treat aliphatic nitro compound and aromatic nitro compound, both in neutral medium, and neutral medium is zinc oblique ammonium chloride, zinc oblique ammonium chloride oblique water. This is neutral medium. With a neutral medium, both of them they form hydroxylamine. And that hydroxylamine is a powerful reducing agent like aldehyde. Means thereby this is hydroxylamine and this hydroxylamine similar to aldehyde, if treated with a Tollens reagent, it gave a positive test. And this test, which is called silver mirror test,
will be forming silver, and this hydroxylamine is oxidized to nitrosobenzene. This gives a positive what? Positive tolerance reagent test. Hence it is called Baker-Mulligan's test. It's called Baker-Mulligan's test. जब ये बेकर मुलिकन टेस्ट हो गया तो इस बेकर मुलिकन टेस्ट को आप नाइट्रो कंपाउंड में यूज कर सकते हो। Syrup tolerance reagent test. So this is called Baker-Mulligan test, which is used to test the presence of nitro group in neutral medium, where this is being converted into hydroxylamine. Hydroxylamine is a very strong reducing agent, because tolerance reagent here is oxidizing agent, क्योंकि वहां से सिल्वर बना है। Is it okay? Next product of reduction. आपके पास हाइड्रोक्सिलामीन है, या सीधा रखिए कि आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है। आप उस नाइट्रो कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करो। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, एक जहां वीकर एसिडिक मीडियम में करो, तो दूसरी स्ट्रॉन्गर में करो। जब वीकर एसिडिक मीडियम होगा, then this nitro is get reduced completely into aniline. But in stronger acidic medium, this get converted into hydroxylamine, and this hydroxylamine then gets rearranged to form ortho and para hydroxyaniline. ठीक हो गया। नेक्स्ट इज अगला रिडक्शन क्या बिहेवियर है इस
कि हमारे पास एक नाइट्रोबेंजीन था, उसकी नाइट्रेशन की बड़ी मुश्किल से और उसने आने वाले नाइट्रो को मेटा पे भेज दिया। जब उसने अपने आने वाले नाइट्रो को मेटा पे भेज दिया तो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है अमोनियम पॉलीसल्फाइड, और ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट एक ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट एक NO2 को एक NO2 की तो रिडक्शन कर सकता है पर दूसरे NO2 की रिडक्शन नहीं कर सकता। That is what is called selective reducing agent. तो इसने क्या किया कि एक NO2 का NH2 बना दिया, दूसरा NO2 वैसे ही रहने दिया। एक बहुत बढ़िया तरीका है, अदरवाइज आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाओ। कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। दिस इज द ओनली तरीका, and this reduction is called Zinin reduction. This reduction is called Zinin reduction. So this is how amine is being prepared by reduction. The next we having is Hoffman bromoamide reaction. In this Hoffman bromoamide reaction, amide is treated with bromine in basic medium as follow. We did the Arant ester synthesis last time. We did last time curtius rearrangement. We did last time Schmidt reaction, where there was Wolff rearrangement. So you treated with bromine in basic medium. अब बेसिक मीडियम की पॉजिटिव है, यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है, with Br will be forming HBr, and HBr when will come in contact with KOH will be forming KBr plus water plus CH3 CO NH, जहाँ एक Br पॉजिटिव बना
तो एक Br नेगेटिव ही बना और बन गया ये. This on treatment further with KOH. This is active hydrogen. And this KOH here will be removing HBr. Yes or no? And that HBr जैसे ही वो बाहर निकलेगा, that come in contact with KOH forming KBr plus water plus here we will be getting CH3 CON. There is neither loss nor profit. This is called the neutral intermediate carbene. Then the same Wolff rearrangement. In that rearrangement, जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, and hence I will be getting methyl isocyanate MIC, and this was MIC which was responsible for 1984 Bhopal gas tragedy. You just treat it with or hydrolyze it so that when it will be hydrolyzed, there will be situation like this when this bond will cleave here. And when this bond will be cleaved here, that amine will be CH3NH2. That CO on hydrolysis will be forming CO2 plus H2O. And very important thing is that this is called descending of series. अमाइड में 2 कार्बन थे, पर अमीन में एक ही कार्बन. डिसेंडिंग ऑफ सीरीज. Descending of series. And this reaction is called Hoffman-bromoamide reaction. The next reaction is Gabriel-Thalamide reaction. The reaction is Gabriel-Thalamide reaction. In this reaction, in this Gabriel-Thalamide reaction, this is this reaction is only used
for the preparation of aliphatic primary amine. अब आप पहले तो बात करें कि थैलीमाइड क्या होता है। हमने बनाया था कि थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करें। थैलिक एसिड इज द एडजेसेंट पोजीशन ये थैलिक एसिड था, अगर आपको याद हो। इसमें हमने 2 अमोनिया डाले, उनकी ट्रीटमेंट की, फॉलोड बाय हीटिंग, और हीटिंग के बाद जो कंफ्यूजन है वो सामने आ गया। यह आ गया थैलेमाइड। थैलेमाइड। अब ये जो थैलेमाइड है इसको हीट कर दो, स्ट्रांगली हीट करो, जैसे स्ट्रांगली हीट किया यहां से अमोनिया भाग गया, and hence we got थैलीइमाइड, जिसके बारे में हमने लिखा था that अल्फा हाइड्रोजन इज एक्टिव, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये भी बुला रहा है, और उस नेगेटिव चार्ज को ये भी बुला रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी -R है और इसका इफेक्ट भी -R ही है। सो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ थैलीमाइड इज एसिडिक इन नेचर। अब हमने क्या किया कि इस थैलीमाइड को, इस थैलीमाइड को हैलो एल्केन के साथ ट्रीट कर देना है। बेस के साथ पहले कर लो, KOH बेस है, उसका OH नेगेटिव और उसका H पॉजिटिव वाटर बना दिया, और वाटर बनाने के बाद we got पोटाशियम थैलीमाइड, क्योंकि भाई एसिड बेस रिएक्शन है। यू ट्रीट दिस पोटाशियम थैलीमाइड with C2H5Br, that is labile halogen, आप एक इथाइल ब्रोमाइड को ले सकते हो,
पर आप ब्रोमोबेंजीन को नहीं ले सकते क्योंकि CX बॉन्ड विल एक्वायर डबल बॉन्ड करेक्टर, वो इनर्ट है। हाँ, ऊपर आपने जो ये किया है KBR, anethyl thalamite, which is then hydrolyzed will be forming primary amine but only aliphatic. Yes, no. पर आप aromatic नहीं ले सकते. It means this is used to prepare aliphatic primary amine. Yes, no. इन मेथड ऑफ प्रेपरेशन को करने के बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन। कुछ हमने कर दी है, सिर्फ नाम लेंगे और साइड में होंगे। हमने कर दी है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। That carbyl amine reaction is only and only given by primary amine, and carbyl amine का मतलब होता है साइनाइड। इसलिए साइनाइड ना बोलना पड़े तो बोल दिया साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड। So carbyl amine reaction is a characteristic feature of प्राइमरी अमीन। बात नंबर 2, one reaction is called Hoffman mustard oil Hoffman mustard oil करें, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नाम क्यों इस तरह से है? नाम में क्या रखा है? You treat the carbonyl compound with carbon disulfide, not carbonyl, अमीन की रिएक्शन करें, उसके बाद में करेंगे प्राइमरी अमीन। When primary amine is treated with this, what will happen is H2S चला गया। H2S कौन है? गैस है, and we are left only with CH3N double bond C double bond S. That is methyl isothiocyanate, who having smell like mustard oil, and hence this reaction is called mustard oil reaction. But इस H2S की प्रेजेंस में मस्टर्ड ऑयल की कोई भी खुशबू आने वाली
नहीं है, इसलिए आप HgCl2 डालें, which will give black precipitates of HgS plus 2HCl, और जब H2S गायब हो जाएगा तो उसका मस्टर्ड ऑयल दिस इज व्हाट इज मिथाइल। अब इसकी मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आएगी क्योंकि अब H2S नहीं है। If aromatic amine treated with if we having aromatic amine means aniline, the reaction is 2:1 molar ratio. So this and this it means this will be forming thiourea, NN diphenyl thiourea. Next is बात नंबर 3, ऑक्सीडेशन बिहेवियर। इस ऑक्सीडेशन को प्राइमरी अमीन के साथ करें, अगर ये प्राइमरी अमीन है लाइक दिस, कौन सी अमीन है? दिस इज प्राइमरी अमीन बाय द वे, and this primary amine when treated with oxide potassium permanganate इस NH2 की जगह इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड वी विल बी गेटिंग NO2
अगर उसकी सेकेंडरी अमीन है तो ऑन ऑक्सीडेशन, अगर तो ये ऑक्सीडेशन H2SO5 के साथ होती है, दैट इज एरोमेटिक बाद में करेंगे, दैट इज CH3 एंड CH3 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यही सेकेंडरी अमीन हमने KMNO4 के साथ ट्रीट किया, तो KMNO4 के साथ ये 2 मोल रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म वी गेट टेट्रामिथाइल एजीन डायाजो जिसको बोलते हैं। अगर टर्शरी अमीन है भाई और KMNO4 है, कुछ होने वाला नहीं है। पर वही कैरोज एसिड अगर लाया H2SO5 this form oxidation product with tertiary amine. This H2SO5 is called carose acid, having peroxide linkage. Next difference in behavior is reaction with HNO2. Primary amine treated with HONO. This will be giving rise to CH3CH2OH plus nitrogen gas plus hydrogen. This HONO we all know अगर आपके पास सेकेंडरी अमीन है तो औरों से थोड़ा सा डिफर करता है कि देयर इज इक्विलिब्रियम। उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, वाटर प्लस CH3N and then N and is called N-dimethyl nitrosoamine, but there is equilibrium. However, if this is tertiary amine, that tertiary amine is this. Yes or no? And this tertiary amine do not have any active hydrogen, so this cannot
But it was said that if instead of एलिफेटिक अगर ये एरोमेटिक अमीन हुई तो रिएक्शन किए हमने तो एरोमेटिक अमीन में रिंग की रिएक्शन हो जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उससे नाइट्रोसो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे आ जाएगा। एंड यू नो HNO इज जनरेटेड इन situ। तो सारी चीजें डिफरेंट हैं बट हमारा फोकस यहां है, क्योंकि यहां we added water to this as per Le Chatelier equilibrium will shift in and you will get nitrous acid followed by the addition of phenol। फिनोल में नाइट्रस एसिड डालते तो क्या होता है, नाइट्रोसेशन होती है, वो ऑर्थोपैरा पे आ जाता है। समझ में आ गई बात? सो लिखिए यहां जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन है वही इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ यहां है, बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम यहां क्या है, इस सामने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। हमने वाटर डाला और वाटर डालने से कॉमन वाटर हो गया, प्रोडक्ट में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिससे इक्विलिब्रियम पीछे को हो गया। पीछे को हो गया तो नाइट्रस एसिड बन गया। नाइट्रस एसिड में तुम क्या करो कि फिनोल डालो। हमने पढ़ा था फिनोल विद नाइट्रस एसिड अंडरगो नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसाइल इज इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैकिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। हमने कहा था बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के it is para which is thermodynamically more stable and it is ortho which will be less stable. So we will be getting two types of product, one is para nitrosophenol and one is ortho nitrosophenol, out of which para nitrosophenol is major product। अगर आपको याद हो तो कहा गया था टॉटोमेरिज्म कि ना के सिर्फ वहां 1-2 शिफ्ट होता है, जो किसने दिया, डायड सिस्टम, जो किसने दिया, लार ने। ना के 1-3 शिफ्ट होता है ट्रायड सिस्टम, बल्कि ये भी आपको वहीं कराया था कि इसमें 1-7 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जब इसमें 1-7 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। जब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा तो बन गया ओ, ऐसा 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 और N के साथ आ गया OH। अब इसमें H2SO4 की प्रेजेंस में फिनोल डालो। जब आपने इसमें फिनोल डाला तो फिनोल की पैरा हाइड्रोजन, क्योंकि H2SO4 कौन है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है,
and we got it like this, and this is called azodide. This is called indophenol dye. This is called indophenol dye, who changes its color in different medium, and the change in color is like gabru. Means in sulfuric acid this is green. In NaOH this become blue. And when the solution is diluted, this become red. So this is green, blue, red. That is what we are saying, gabru. This indophenol dye formation and this reaction given, this is a characteristic feature of secondary amine, and such reaction is only given by secondary amine, and the name of the reaction is Lieberman nitroso reaction. Name of the reaction is Lieberman nitroso reaction. This reaction is the characteristic feature of secondary amine and is called Lieberman nitroso reaction, and this is reaction given by secondary amine only. This is the reaction given by secondary amine only, क्योंकि वहाँ ही रिवर्सिबल था. हो गया distinction का. Now the next distinction is of Hinsberg reagent. Hinsberg reagent is nothing but it is phenyl sulfuryl chloride. This phenyl sulfuryl chloride, when treated with primary amine, the active hydrogen from here remove the Cl from here, and hence we get the product as an alkyl sulfonamide, and this an alkyl sulfonamide is soluble in base as it having active hydrogen. So in base this form,
metal salt which make this soluble. Yes or no? But if this is a secondary amine, the first reaction will occur, but it will be insoluble in base. What are we getting over here? This, and this, that is an N-dialkyl sulfonamide, which added with QH, there is no reaction. There is no reaction. However, if this is tertiary amine, even the first step will not occur. Now is how the mixture of amine can be separated. Haynes' book, this reagent is Haynes-Berg reagent. Getting next method to separate the amine is Hoffman method. ये जो बताया ये डिस्टिंक्शन के लिए है. सेपरेशन का मतलब होता है कि वहाँ फिजिकल स्टेट का चेंज होना. Hoffman method. Hoffman reagent is diethyl oxalate. So, that Hoffman reagent is diethyl oxalate, that is diethyl oxalate. And this diethyl oxalate, when treated with primary amine, they react in 2:1 ratio. They react in 2:1 ratio, as it having active hydrogen. This will remove C2H5OH from here. How many moles? 2 moles of this, and what you will be getting is CO, NHCH3. That is, you will be getting N-dimethyl oxamide, and you know amide shows strong hydrogen bonding, so this will be solid. But when the amine is secondary, the bulkiness increases. Thus, the reactivity decreases. The reaction occurs in 1:1 molar ratio. And when this happens like this, what will happen is only 1 ethanol will be removed. When only 1 ethanol will be removed, you will be getting this, and the second part will remain as it is. So this is liquid, and you know tertiary amine do not have any active hydrogen, no reaction, that is a gas.
अब बात हुई कि भाई what is the nature of reaction of aniline? Aniline having NH2 group, and that NH2 group shows very strong plus R effect, thus activate the ring for electrophilic substitution reaction. This plus R effect activate the ring for the electrophilic substitution reaction to occur. What does that mean? That means that if you're doing the bromination of this aniline, this NH2 group, this will activate the ring in all the positions, and hence will be forming tri-substituted product, and we will be getting white precipitates of 2,4,6 tribromoaniline, and this happens in aqueous medium as we did with phenol. On bromination in aqueous medium form white precipitates of tribromophenol. It means beyond that orthobromoaniline should be formed, parabromoaniline should be formed, but NH2 is highly activating. This is not possible. I can allow the tri-substitution to occur. It means if you want to form monobrominated product, this is not the best way. उसने कहा देखिए एनिलीन की कभी डायरेक्ट नाइट्रेशन मत करिए, क्योंकि कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर होता है तो बेंजीन हाईली एक्टिवेटेड होती है, इसलिए वो उठपटांग करती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन इसलिए हो जाती है कि भाई जो ये HNO3 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुई तो फिर नाइट्रेशन हुई, और नाइट्रेशन डायरेक्ट हुई तो भैया ऐसा प्रोडक्ट बना कि हम खुद हैरान परेशान है कि ये आया कहाँ से। और तो नाइट्रो एनिलीन बना, अच्छी बात थी, पैरा नाइट्रो एनिलीन बना, अच्छी बात थी। तकलीफ तो तब हुई जब मेटा नाइट्रो एनिलीन बना। अरे भाई ये क्या हो रहा है, और ऐसा थोड़ा बहुत नहीं, 47%, 51%, दिस इज ओनली 2%। और ऐसा जब हुआ तो इसने हमें सोचने के लिए विवश कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। इसे एनसीईआरटी में साफ क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन मत करो। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बना, पैरा नाइट्रो एनिलीन बना तो अच्छी बात है। उसने पूछा भाई मेटा कहां से आया, हमने कहा कि नाइट्रिक एसिड एक एसिड है और एनिलीन एक लुईस बेस है, और जो लुईस बेस होता है वो लोरी ब्राउनस्टेड बेस भी होता है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में कहीं कुछ ऐसा हुआ और उस ऐसे होने की वजह से ये प्रोडक्ट मेटा बना। This anilinium ion is a deactivating NH3 positive, and is deactivating, it means it is meta directed। मना किया उसको भाई मत करो डायरेक्ट नाइट्रेशन, हमने फिर मना किया। हमने बोला देखिए जी आप डायरेक्ट सल्फोनेशन मत कर दीजिएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एनिलीन इज लोरी ब्राउनस्टेड बेस। एक H पॉजिटिव देना चाहता है, दूसरा लेना चाहता है। जैसे ही आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन की, उस डायरेक्ट नाइट्रेशन से वहां हर कुछ हो गया, और वो हर कुछ था एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट एक सॉलिड है,
आपने कहा सॉलिड बन गया, आप इसको हीट करो। आपने इसको हीट किया, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग इज कॉल्ड बेकिंग। जब आपने इसको इतना स्ट्रांगली हीट किया तो इसने बाहर पानी फेंक दिया, और पानी फेंकने के बाद जो बना वो था ये कौन है? दिस इज सल्फानिलिक एसिड। और सल्फानिलिक एसिड ने क्या किया? उस सल्फानिलिक एसिड ने ये कहा मैं खुद ही एसिड भी हूं और मैं खुद बेस भी हूं। मेरा NH2 जहां लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है, मेरा SO3H लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। यस और नो? इसका मतलब हुआ उस एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो गई, और उस एसिड बेस, और आपको पता है सल्फोनिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इन inorganic chemistry also. And what happened is NH2 lone pair was ready to accept the H positive, because we have already done that the one who is strong acid, its conjugate base would always like to remain in the form of iron. SO3 negative is more stable than SO3H. COO negative is more stable than COOH, because in COOH there is separation of charge, and in SO3H there is separation of charge. But if it is SO3 negative, it is a stable conjugate base with the 3 equivalent resonating structure of negative, which is resonating on O only. And we got this. What is this? हमने इस आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, कहीं को भी नहीं गया। So this is what is called a dipolar ion. This is what is called zwitterion, is a dipolar ion. And the zwitterion, this having both the group, it having acidic group, it having basic group. What does this mean? Is it that when we will add acid to this, this will dissolve? When we will add base to this, this will dissolve, because this having both the parts? And this question was in competitive exam. We added acid to this. Who is more stable? Is it SO3 negative or is it SO3H? SO3 negative is stable conjugate base or weak conjugate base, as well as weak conjugate base. It means this would not like to accept. What? It means अगर हम कहते हैं कि zwitterion एसिड में डिसॉल्व हुआ, तो हम कहेंगे नेगेटिव इधर आया और पॉजिटिव इधर गया, एंड सल्फोनिक एसिड बना। भला ऐसा पागल कौन है कि इतने स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस H पॉजिटिव ले ले? कैसे? इट मीन्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैविंग बोथ द ग्रुप, zwitterion are insoluble in acids. So it is insoluble. Then we talk about, what about base? What do you think that base having this Na positive, where it will go?
अबे Na पॉजिटिव विल गो विद SO3 नेगेटिव, क्या हो जाएगा उस SO3 नेगेटिव को? कुछ नहीं। अबे मेटल आयन तो मस्त मौला होते हैं, वो किसी के साथ थोड़ी ना रहते हैं। तो SO3 नेगेटिव अभी भी SO3 नेगेटिव ही है। ऊपर बेस गया NH3 बेस और वहां से H पॉजिटिव निकला, वाटर निकल गया, एंड वी गॉट दिस। इट मींस zwitterion are soluble in this, but the problem still persists. And the problem was, why not? Why not to do direct bromination, direct nitration, direct sulfonation? But because the problem is here. तो फिर उसने कहा तो फिर क्या करूं? हमने कहा ये सारा किया धरा उस NH2 का है। जैसे ही कोई आता है ये NH2 कुछ ओवर एक्साइटेड हो जाता है और इस रिंग को रिच कर देता है, इसलिए ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बना, इसलिए zwitterion बना, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बना। कहता फिर क्या करें? आपकी NCERT में पूछा गया है तो क्या करें? तो हमने कह दिया इट इज necessary to acetylate aniline। हमने कहा कि एनिलीन की एसिटाइलेशन कर दो। वो कहने लगा क्यों? हमने बोला थोड़ा ठहरिए, बताते हैं क्यों। एसिटाइलेशन का मतलब हुआ टू ट्रीट विद एसिड डेरिवेटिव, एंड द फास्टेस्ट रिएक्शन वाज विद acid chloride. So chloride are the fastest acylating agent, but are not preferred. We prefer the one who having control rate of reaction. So the most preferred acetylating agent is anhydride. Yes or no? And when this anhydride will be added to this aniline, we know that aniline having active hydrogen, and that active hydrogen will be forming CH3COH and will be getting this. Yes, no. And the one which we are getting, this is called acetanilide. And when this is acetanilide, yeah, when this is acetanilide, वो कहता कि इसके बनने से क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? हमने कहा इसने उसकी एक्साइटमेंट को 50% खत्म कर दिया। बिकॉज दिस शोज अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिंग को नहीं जा रहे हैं। रिंग के ऊपर लोन पेयर नहीं है, zwitterion नहीं बन सकता। रिंग के एन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, मेटा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? उसके साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अबे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कैसे बनेगा? तो उसने कहा कि वो ऐसा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एनिलीन का वो बिहेवियर चेक हो गया जिसमें वो हर कुछ कर रहा था। हमने कहा दिस लोन पेयर विल गो हियर, यस नो, दिस पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टिंग हियर, will be getting negative here, will be getting here. It means this N is getting positive charge. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिंग को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब ऐसा होने से उसके ऊपर चेक हो गया। अब कहानी खत्म। So what we did, we don't want to do, अब हम ब्रोमिनेशन करना चाह रहे हैं भाई। So what I will be doing is, मैं एनिलीन लूंगा और ब्रोमीन लूंगा, और ब्रोमीन से पहले तो मैं उसकी एसिटाइलेशन करूंगा। ब्रोमीन बाद की बात है, पहले मैं करूंगा एसिटाइलेशन। जब मैंने किया एसिटाइलेशन, वहां बन गया एसिटिक एसिड। जब बना एसिटिक एसिड तो वहां बन गया था एसिटेनिलाइड, और उस एसिटेनिलाइड ने ब्रोमीन को भेजा टू डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो भाई वही रहेगा जो नेचर है।
तू ऑर्थो या पैरा पे चला जा, यस और नो। चला गया वो। पर उसने कहा ये क्या बात हुई, हम तो एनिलीन की बात कर रहे थे, आपने तो एसिटेनिलाइट बना दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इसमें वाटर डाल दो। जब आपने वाटर डाला तो फिर से एक एसिटिक एसिड बाहर निकल गया और वो एनिलीन अपनी पुरानी फॉर्म में आया। पर इस बार ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं थे, बल्कि जो हम चाह रहे थे वो प्रोडक्ट थे। हम चाह रहे थे कि वहां मोनोब्रोमो बने तो मोनोब्रोमो ही बन रहा था। हम चाह रहे थे कि ऑर्थो और पैरा बने तो ऑर्थो और पैरा ही बन रहा था। इसलिए उसने कहा कि तुमने कोई भी रिएक्शन करने से पहले ये काम कर लेना है। अब आपके पास एक एसिटिक एसिड यहां है, एक एसिटिक एसिड यहां है, हीट करो, व्हाट यू विल गेट, फिर दोबारा यूज करो। इट मींस आप हमेशा इसको यूज करोगे। अब आप नाइट्रेशन करो, आप नाइट्रेशन करोगे, कोई मेटा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, बट नाइट्रेशन ओब्लिक वाटर कर देना ताकि बाद में सीधा आपके पास एनिलीन बने और NO2 ग्रुप पैरा पे है और NO2 ग्रुप ऑर्थो पे है, यस और नो। आप वही सल्फोनेशन करें सेम, बट इस बार जो ट्राई नहीं बनने वाला। सो दिस ऑल अबाउट amine, aniline. Thank you very much.